Okay, so coming to our next composition, that is nitrogenous base. We have discussed pentose sugar. Okay, so nitrogenous bases we have seen there are two types of nitrogenous bases, purines and pyrimidine, and the structure we have seen, example we have seen. Now coming to our next composition, pentose sugar. So the name suggests its meaning. Pentose means what? Penta. Sugar means molecule, sugar molecule. So the sugar molecule made up of 5 carbon is called it as a pentose sugar. Okay. So pentose sugar are of two types again. Ribose and deoxyribose. So pentose sugar we find two types, ribose and deoxyribose. Okay, so we need to see the structure. So both are pentose sugar only, they have 5 carbon ring, but there is a slight difference. ठीक है, एकदम छोटी सी difference होते हैं ये दोनों के बीच में. So we will see that. See the structure, it looks like this. Okay, so I hope it is visible. So here we have first carbon, here we have second carbon, third carbon, 4 carbon, and the 5 carbon is outside. Okay, they are the 5 carbon is the arm extending outside of the molecule. Okay, so the ring, actually the ring, we called it as a ring. Okay, complete ring. The complete ring is made up of actually 4 carbon, 1, 2, 3 and 4. जो रिंग होते हैं वो 4 कार्बन से बनाया गया है. ठीक है, जो 5 कार्बन होते हैं वो उसके साथ अटैच होकर रहते हैं बाहर में. Okay, so remember the ring is actually made up of 4 carbon ring. The 5 carbon is outside, which is attached to it. Okay, so overall it is a 5 carbon only, but the ring is made up of 4 carbon. बुझे पाइसा? Okay, 4टा कार्बन है मिली पाले की होय, 4टा कार्बन मिली पाले এটা ring बनाए, जोनो कार्बन ring बोली कहूँ आमी এটা ring এনেকুৱা. जोनो 5 নম্বৰ कार्बन থাকে হেতু বাহিৰত লাগি থাকে, মলিকুলৰ লগত বাহিৰৰ ফালে থাকে. ওকে, বাহিৰৰ ফালে থাকে আৰু মলিকুলত লাগি, বাট ওভাৰঅল হেতু 5টা কাৰ্বন, টোটাল 5টা কাৰ্বন মিলি পেলে सुगर मोलिकुल तो बनाए. ओके, खाली रिंग है 4टा कार्बन मिली पेले बनाए. ओके, दिस आर द स्ट्रक्चर वी फाइंड. ओके, व्हाट यू नीड टू नो इज एट फर्स्ट कार्बन वी हैव OH ग्रुप फ्री एंड हाइड्रोजन. ठीक है, ये जो OH होते हैं, OH इसको हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं और वी ऑल्सो कॉल इट एज ए फंक्शनल ग्रुप. हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं. देखो साइड में लिखता हूँ, इसको हम लोग माने साइंटिस्ट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं और इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं. इसको याद रखना, कहीं साइड पे लिख के रखो. OH को हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं और इसको फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं. Why we call it as a functional group? Because it has a function to attach another molecule to it. Okay, इसका फंक्शन होते हैं जो जहाँ पे भी OH ग्रुप फ्री रहेंगे वो क्या करेंगे, वो दूसरा मोलिकुल को उसके साथ कंबाइन करते हैं या ज्वाइन कर दे. कैसे ज्वाइन करते हैं? दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म करते हैं. ठीक है, दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म करके वो कंबाइन करते हैं दूसरा मोलिकुल को, इसलिए उसको फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है. फंक्शनल ग्रुप मीन्स व्हाट? इट हैज अ फंक्शन. व्हाट फंक्शन? टू जॉइन और टू कंबाइन अनदर मोलिकुल बाय मेकिंग ए बॉन्ड, बाय फॉर्मिंग ए बॉन्ड विद ईच अदर. ठीक है, सो हम लोग क्या बोले थे नाइट्रोजनस बेसिस में? The bond is formed between the first carbon of pentose sugar
चलो प्यूरिन का एग्जांपल देते हैं. फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस सुगर एंड 9 पोजीशन ऑफ purine. That was we studied. That means the bond will be formed here, first carbon of pentose sugar. क्योंकि फर्स्ट कार्बन में OH ग्रुप फ्री है तो OH ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे. अगर प्यूरिन है प्यूरिन बॉन्ड फॉर्म करेंगे. पायरिमिडिन है तो पायरिमिडिन फॉर्म करेंगे इसके साथ. द बॉन्ड दैट इज फॉर्म इज कॉल्ड इट एज ए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं हम लोग उसको. ठीक है, थोड़े देर बाद दिखाता हूँ. 2C कार्बन में इन केस ऑफ राइबोस OH ग्रुप फ्री होते हैं बाहर, अंदर में, अंदर बाहर का बात नहीं है. इट रिमेन्स लाइक दिस. ओके, द OH ग्रुप इज फ्री एंड देयर इज अ हाइड्रोजन लिंक विद इट. 3 कार्बन में भी OH ग्रुप फ्री होते हैं और हाइड्रोजन उसके साथ अटैच रहते हैं. So OH means what? Functional group. Functional group means what? It has a function to combine another molecule by making a bond with each other. Okay? 4 कार्बन में सिर्फ हाइड्रोजन होते हैं, उसमें OH ग्रुप नहीं रहते हैं. 5 कार्बन में 2 हाइड्रोजन रहते और एक OH ग्रुप रहते हैं उसके साथ. ठीक है, 2 हाइड्रोजन रहेंगे और उसके साथ एक OH हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप रहेंगे उसमें. Okay, so these are the structure of ribose sugar, which is nothing but a pentose sugar. So if the bond is formed with the nitrogenous bases, the bond will be formed with the first carbon of this pentose sugar, and if it is purine, it will form with the 9th position of purine. If it is pyrimidine, it will form with the first position of pyrimidine. ठीक है, पढ़ो ये चैप्टर को ना, एकदम पढ़ो. ठीक है, एकदम पढ़ाई करो, एक दिन भी मत छोड़ना. Every day you have to study. If you want to understand this chapter, every day you have to study. It is mandatory. And when you understand this chapter, you will feel happy yourself. You know, you will feel like, oh yes, I am a science student now. You will feel yourself proud if you understand this chapter and the previous chapter also, genetics. Very interesting, you know, very interesting to study, even very interesting to teach also. So please, we have to be a symbiotic association with each other. You know, symbiosis, we have to show symbiosis now. Both the organism gets benefit with each other. We represent with plus plus. Okay, so we have to be symbiosis now. Okay, साथ में मिलके काम करना होगा. You have to study, then only I will feel like teaching. If you don't study, I won't feel like teaching. Okay, so पढ़ाई करो. ठीक है, so मैं यहाँ सिंपल से ऐसे दिखा देता हूँ नाइट्रोजनस बेस. ओके, सिंपल से दिखाऊंगा अभी, बाद में मैं शो करूंगा कंप्लीट मोलिक्यूल कैसे देखते हैं जब कंबाइन होते हैं साथ में. सो द बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस सुगर एंड सो एडर प्यूरिन और पायरिमिडिन. ठीक है, प्यूरिन भी हो या पायरिमिडिन हो, एडर. सो नाइट्रोजनस बेसेस. तो ये बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? द बॉन्ड दैट इज फॉर्म बिटवीन द पेंटोस सुगर एंड द नाइट्रोजनस बेस इज नोन एज बीटा glycosidic bond. I think it is visible. Beta glycosidic bond बोलते हैं. Okay, sometimes 1 mark के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं. What is the name of bond that is formed between the nitrogenous base and the pentose sugar? So what will you answer? The bond is known as beta glycosidic bond. Entrance में तो ये सब क्वेश्चन तो कॉमन है. Okay, so this is how the bond is formed. So this is the structure of ribose sugar. Coming to deoxyribose now. Same, the structure will be the same because both are pentose sugar, 5 carbon sugar, right? The only difference is here. I'll show you. So I'm drawing here the structure of deoxyribose. Okay. So here we have 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, now 5 carbon. Again, I'm repeating the same sentence. The ring is made up of 4 carbon. ठीक है, जो रिंग है ऐसा, इसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में, डिटेल्स में और पढ़ेंगे ये स्ट्रक्चर को. जब डीएनए और आरएनए को हम लोग कंपेयर करेंगे तब फिर से इसको ड्रॉ करेंगे. सो ये रिंग को हम लोग फुरेनस रिंग बोलते हैं. अभी के लिए छोड़ो. ठीक है, दिस रिंग, कंप्लीट रिंग
is made up of 4 carbon, 1, 2, 3 and 4. The 5 carbon is attached with it, with the molecule, and it is in the outside of it. ठीक है, इसको सिंपली ऐसा अभी समझना, जो 5 वाला कार्बन होते हैं वो सिर्फ उसके साथ अटैच होके रहते हैं, बाहर में रहते हैं, वो रिंग फॉर्म नहीं करते हैं. ठीक है, सो दिस इज अबाउट डीऑक्सीराइबोस. आई हैव रब दिस डीऑक्सीराइबोस because I need a space, so again let me write. So, okay, so these are the structure. So structure will be the same, only the differences is here. There will be in carbon number 1 there will be OH group free and hydrogen will be there attached with it. At 3 carbon OH will be free, then hydrogen will be there with it. 4 carbon में सिर्फ हाइड्रोजन रहेंगे, OH ग्रुप नहीं रहते. 5 कार्बन में 2 हाइड्रोजन और 1 OH ग्रुप रहते हैं. ठीक है, now at 2 कार्बन देखो, ये at 2 कार्बन this OH group is replaced by single H in case of deoxyribose. deoxyribose में क्या होता है, जो OH ग्रुप होते हैं 2 नंबर कार्बन में, OH ग्रुप को रिप्लेस करके सिर्फ हाइड्रोजन होते हैं, उसमें OH ग्रुप नहीं रहते हैं. यहाँ पे OH नहीं रहते हैं, सिर्फ H होंगे यहाँ पे. ओके, सिर्फ H होंगे. अंडरस्टूड? So in case of deoxyribose, instead of OH group at 2 carbon, there will be only single H. That's why it is called it as a deoxy. Deoxy मतलब क्या है? डीजेनरेशन ऑफ ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन जो है वो डीजेनरेट हो जाता है. ठीक है, डीजेनरेट हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं मुझे पता नहीं. दिस इज नेचर. ओके, so it happens in nature. Does in case of deoxyribose what happened? At 2 carbon position the OH is replaced by single H. Okay, so that is the only difference we find in between ribose and deoxyribose. That's why it is known as deoxyribose. Deoxy मतलब degeneration of oxygen. देखो इतना सिंपल, नाम में ही मीनिंग छुपे होते हैं इन बायोलॉजी. जस्ट यूज योर कॉमन सेंस. ठीक है, अपना कॉमन सेंस यूज करो. दूध पियो ठीक से, बादाम खाओ, घर में बैठ के क्वारंटाइन में, ईट गुड फूड, हेल्दी फूड एंड स्टडी एवरी डे. ऑल राइट, so instead of 2 OH group in deoxyribose we find only 1 OH. so कौन सा कार्बन नंबर में OH ग्रुप रिप्लेस होते हैं उसको याद रखना. कौन सा? 2 कार्बन नंबर में. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही OH ग्रुप फ्री पाए जाते हैं. ये जो OH ग्रुप होते हैं ये तो नाइट्रोजनस बेसिस के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं. ठीक है, ये जो OH ग्रुप होते हैं 5 कार्बन में वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इसलिए सिर्फ एक ही OH ग्रुप पाए जाते हैं इन केस ऑफ डीऑक्सीराइबोस. ओके, जो 5 वाला कार्बन होते हैं उसमें OH होते हैं, ये OH फॉस्फेट ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं. जो 1 कार्बन वाला होते हैं OH वो नाइट्रोजनस बेसिस के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं. ओके, सो दैट बॉन्ड इज नोन एज बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. रिमेंबर, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. नाउ एट द 5 कार्बन, इसमें भी ठीक है, द 5 कार्बन नंबर this OH group it makes a bond with phosphate group. ठीक है, तो phosphate group को हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे. सो अभी के लिए यहाँ पे लिख के रखता हूँ द बॉन्ड का नाम. तो इसको मैं इस तरफ लिखता हूँ. ठीक है, इट्स सेम थिंग. इसको फिर से रब करना होगा. इसको मैं इस तरफ लिखता हूँ. इट इज़ द सेम थिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं. तुम इस तरफ लिख सकते हो, इस तरफ लिख सकते हो. Okay, same thing. Only to make it easy, to make it in a better view, I'm drawing this side. CH2OH. Okay. So the bond, the phosphate group जो होते हैं वो 5 कार्बन का पेंटोस शुगर के साथ ज्वाइन होते हैं. ओके, यहाँ पे phosphate group, इसको मैं सिंपली ऐसे दिखा रहा हूँ. जो phosphate group होंगे 3 मॉलिक्यूल होते हैं ना, नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. नाइट्रोजनस बेसिस तो 1 नंबर कार्बन में फॉर्म करते हैं, ज्वाइन करते हैं. जो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं वो पेंटोस शुगर के साथ 5 कार्बन में ज्वाइन करते हैं बाय मेकिंग ए बॉन्ड विद ईच अदर. वो बॉन्ड का नाम है फॉस्फोग्रुप.
डाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। आई होप इट इज विजिबल। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। व्हाट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन द 5 कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर एंड द फॉस्फेट ग्रुप, द बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। इसमें भी सेम ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ में मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सेम रहेंगे, इसमें भी सेम रहेंगे। द ओनली डिफरेंसेस वी फाइंड इन केस ऑफ राइबोस एंड डिऑक्सीराइबोस इज हियर। ओवरऑल द स्ट्रक्चर इज सेम, ओके। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है, दैट्स यू नीड टू रिमेंबर। हाउ यू विल रिमेंबर? बाय ड्रॉइंग द डायग्राम, ठीक है। सो वेयर द नाइट्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म, द नाइट्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर, and if it is purine then the 9th position, if it is pyrimidine then it will be the first position, ठीक है। Where phosphate group is formed? The phosphate group is formed between the between the fifth carbon of fifth carbon। इसमें भी सेम होंगे, ठीक है। मैं यहाँ में नहीं दिखा रहा हूँ, स्पेस नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। इसमें दिखा नहीं रहा हूँ, इसमें दिखा रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना, सेम रहेंगे। So the phosphate group is formed between the 5th carbon of pentose sugar, okay, and the bond form is known as phosphodiester bond, ठीक है। जहाँ पे OH ग्रुप होंगे उसके साथ कोई मोलिक्यूल्स आके ज्वाइन करते हैं, that's why इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जहाँ पे OH ग्रुप फ्री रहेंगे वहाँ पे दूसरा मोलिक्यूल आके ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ये जो OH ग्रुप फ्री होते हैं ये हम लोग का रेप्लिकेशन में करते हैं। रेप्लिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, DNA रेप्लिकेशन वी विल स्टडी लेटर ऑन इन दिस चैप्टर ओनली। सो दिस OH ग्रुप इट मेक्स अ बॉन्ड विद अनदर DNA। इन DNA रेप्लिकेशन टॉपिक वी विल सी दैट, ठीक है। सो फॉर नाउ रिमेंबर व्हाट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, व्हाट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और कौन सा पोजीशन में बॉन्ड फॉर्म करते हैं, दैट्स ऑल यू नीड टू रिमेंबर। सो डायग्राम के साथ प्रैक्टिस करो। सो लास्ट वी हैव phosphate group. So 3 composition make nucleic acid, right? We have seen nitrogenous bases, we have seen pentose sugar. Now we will see phosphate group. So we have seen nitrogenous bases, we have seen pentose sugar, now we have phosphate group. So what they provide, phosphate group, what they do is function. Phosphate group helps in maintaining of charge. So it maintains charged particles among the molecules, okay? It maintains charges, that's it, phosphate group. So we need to see the structure, okay? The phosphate group, the molecular formula are H3PO4, okay? It is molecular formula H3PO4. So when we draw the structure so we have OH 3 OH group free, that means we have 3 hydroxyl group free. So H3 1 2 3, O4 1 2 3 and 4, it makes with double bond to maintain valency. You might know how to maintain valency. Then we have phosphorus. So when they make a bond, one of the hydroxyl group, that means one of the functional group, either this or this, कोई एक functional group जाके it makes a bond with the 5th carbon of pentose sugar, right? So when we write this, the bond is formed between one of the हाइड्रोक्सिल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। OH को हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सो द बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन वन ऑफ द हाइड्रोक्सिल, वन ऑफ द मीन्स either one of this, okay, either one of these 3. So between one of the hydroxyl group, the bond is formed between one of the hydroxyl or functional group with 5 carbon of pentose sugar, ठीक है। and what we call that bond, we call that bond it as a phosphodiester bond, okay. So this is about phosphate group. So phosphate group, what they do, it helps in maintaining of the charged particle among all the molecules. So the formula is H3PO4. The structure look like this,
and the bond is formed between one of the hydroxyl group of phosphate and with the 5 carbon of pentose sugar. Okay, so this is the overall composition of nucleic acid. Now I will draw the actual structure of molecules. Okay, the actual structure of nucleic acid molecules when they combine together, how it looks like. So this diagram is just for you to understand. Normally it doesn't ask in exam, but still you should know. ठीक है? So actual structure में कैसे देखते हैं molecules जो, so it is made up of 3 things, right? Nucleic acid is made up of 3 things: nitrogenous bases, pentose sugar, and phosphate group. Now how they combine with each other? They combine with each other by forming a bond between with each other. Okay, so we have pentose sugar. Okay, so we have first pentose sugar. So we have carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, and carbon number 5. So suppose we are talking about ribose sugar here. We can take deoxyribose also, but let me take ribose. It doesn't matter. It has one OH group and H with it. ओके, कार्बन नंबर में एक OH होते हैं, उसके साथ एक हाइड्रोजन होते हैं. कार्बन नंबर 2 में एक OH फ्री होते हैं और हाइड्रोजन होते हैं उसके साथ अटैच. तो वी आर टॉकिंग अबाउट राइबोस, इसलिए हम लोग दो कार्बन नंबर में OH लिख रहे हैं. सो डिऑक्सीराइबोस होने से यहाँ में हम लोग क्या लिखता है? ओनली 1 H लिखता है. ठीक है. सो 4 कार्बन में देयर विल बी H, देन हियर वी हैव H2OH. देखो ऐसे भी लिख सकते हैं. सो आई एम राइटिंग OH ग्रुप दैट आउटसाइड ऑफ इट. दैट मीन्स व्हाई? बिकॉज दिस OH ग्रुप हैज अ फंक्शन टू बाइंड अदर मोलिक्यूल. इसलिए मैं आउटसाइड बाहर में ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि जब दूसरा मोलिक्यूल आए तो इसके साथ ज्वाइन करने में, देखने में आसानी हो. ठीक है, टू मेक इट विजुअलिटी, ए गुड विजुअल व्यू. So I have drawn OH that side. You can draw that side also, it doesn't matter. So first of all, the nitrogenous bases, it comes and bind in which carbon number of pentose sugar? Suppose we are taking the example of pyrimidine. So pyrimidine का structure draw करो. So we have carbon. Let me draw at the top of it. Let me draw that side. So we have carbon, nitrogen, then carbon, nitrogen, carbon, carbon. It makes a double bond with this. It makes a double bond with this. It makes a double bond with this. Because I know the structure, so it is easy for me. So when you do the practice, it will become easy for you as well. So আমি কেনেকৈ কাউন্ট কৰো? So আমি ইফালে পৰা কাউন্ট কৰো. Okay, আমি pyrimidine structure draw কৰি আছো. So if I draw the structure of purine, I need to draw the one more cycle also. Okay, right? So I'm drawing the example of pyrimidine. So we count from this clockwise direction, 5 and 6 carbon. So how they makes a bond? In case of pyrimidine, the bond is formed between the first carbon of pentose sugar and the first position of pyrimidine. ठीक है, अगर purine होने से क्या होता? The bond is formed with the first carbon of pentose sugar and the 9th position of pyrimidine. purine होने से 9 पोजीशन होता यहाँ पे. pyrimidine को ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए 1 पोजीशन. ठीक है. So they makes a bond with one of the hydroxyl group here which is free. OH group free होते हैं ना. What I have said before, whenever there is a OH group free, it will always try to make a bond with other molecule. ठीक है. जहाँ पे OH ग्रुप रहेंगे फ्री, वो हमेशा दूसरा मोलिक्यूल के साथ कॉम्बाइन होते हैं बाय मेकिंग ए बॉन्ड फॉर्म करके. ठीक है. ये दोनों OH ग्रुप का क्या फंक्शन है, ये क्या कॉम्बाइन करते हैं, हम लोग दूसरा टॉपिक में पढ़ेंगे. ये रेप्लिकेशन प्रोसेस में मदद करता है. ओके, दिस टू OH ग्रुप दे बाइंड अदर मोलिक्यूल ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस. दिस रेप्लिकेशन वी विल डिस्कस इन अदर टॉपिक in this chapter only later on. So the bond is formed between the first carbon of pentose sugar and the position of nitrogenous bases. We call it as a beta glycosidic bond.
Okay, this diagram I'm showing to you is just for you to understand, and it is important also to clear your concept. But exam में ऐसा नहीं पूछते हैं, ठीक है? Draw the structure, the molecular structure of complete acid. So ऐसा question नहीं पूछा गया अब तक, but who knows? So it's better that you should know all the things. So this is the bond that it makes with nitrogenous bases. Now next we have phosphate group. What is the structure of phosphate group? इसको कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग? So बीच में होते हैं phosphate, then it has hydroxyl, that means functional group, hydroxyl, then it has an oxygen with double bond. So when they make a bond, the bond is formed between one of the hydroxyl group of phosphate and the fifth carbon of hydroxyl group. ठीक है? बॉन्ड हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ ही फॉर्म करते हैं. ओके, जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री रहेंगे उसके साथ ही बॉन्ड फॉर्म करते हैं और मॉलिक्यूल को बाइंड होते हैं. सो द बॉन्ड दैट इज फॉर्म बिटवीन, यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं है, ठीक है? फॉस्फेट ग्रुप में देयर इज नो एनी पोजीशन, देयर इज 3 OH ग्रुप फ्री. सो आउट ऑफ दिस 3, one of the OH group makes a bond with the fifth carbon of pentose sugar. ठीक है? Because at the fifth carbon it has OH group free, and the bond that is formed between this and this is known as okay, let me write it black only, phosphodiester bond. Phosphodiester bond. Okay, so this is the complete molecular structure of nucleic acid. So what we have discussed, what we have known now, nucleic acid is made up of 3 things. Okay, pentose sugar, nitrogenous bases, and phosphate group. Here we have pentose sugar, here we have nitrogenous bases, here we have phosphate group. So they combine together, they make some molecules known as nucleic acid. Okay, so remembering part is this: the name of the bond. What is beta glycosidic bond? Sometimes the question may ask for 1 mark exam entrance point of view. The question always asks, what is phosphodiester bond? You need to remember all those bonds and between which carbon number and which position. कौन सा carbon number position, उसका position भी याद रखना जरूरी होता है, ठीक है? So if it is purines, the position of nitrogen will be 9. But the number of carbon number will be same, 1 ही होंगे पेंटोस शुगर का नाइट्रोजनस बेसिस के साथ, ठीक है? तो ये मैंने पायरिमिडीन को ड्रॉ किया, इसलिए ये कार्बन नंबर 1 होते हैं, पोजीशन नंबर 1, कार्बन नहीं, पोजीशन नंबर 1 होते हैं. Okay, so this is the complete molecular structure of nucleic acid. We have pentose sugar, we have nitrogenous bases, and we have phosphate group. Understood? I hope you understood. So this nucleic acid was first discovered by Friedrich Mitscher. Scientist name. If you forget the name, try to remember fried rice because it is familiar to you. You remember, you can easily relate your answer. Okay, if you even forget. So he found out that there is an acidic substance in a pus cell. Pus cell मतलब जो घाव होते हैं, घाव में जो सेल पाए जाते हैं उसको pus cell बोलते हैं. Okay, so and then he first called it as a nuclein बोला गया था वो पहले नाम. Then later on another scientist, Altman, gave the name nucleic acid. Okay, that's it. This is the basic things you need to know. Next thing what you need to know, the composition and the types. So nucleic acid are of 2 types, DNA and RNA. DNA and RNA को बाद में पढ़ेंगे. उसके बाद the composition are nitrogenous bases, pentose sugar, phosphate group. Nitrogenous bases are of 2 types, purine and pyrimidine. Purine का example है adenine and guanine. Pyrimidine का example है cytosine, thymine and uracil. In case of DNA, adenine and guanine तो रहेंगे, RNA में भी रहेंगे adenine and guanine. But pyrimidine में क्या होंगे? DNA में cytosine and thymine, uracil नहीं रहेंगे. In case of RNA, एडिनिन एंड ग्वानिन रहेंगे सेम, लेकिन पायरिमिडीन का वहाँ में साइटोसिन एंड यूरेसिल रहेंगे, थायमिन नहीं रहेंगे आरएनए में. दैट्स यू नीड टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर वी हैव सीन. एडिनिन प्यूरिन का स्ट्रक्चर देखा, पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर देखा. विद दैट यू कैन राइट योर आंसर. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव पेंटोस शुगर.
Pentose sugar we have out of again two types, ribose and deoxyribose. Pentose sugar means what? 5 carbon molecule, 5 carbon compound molecule. So pentose sugar. So ribose में deoxyribose में differences क्या पाए गए? Only at the 2 carbon number. While in case of deoxyribose, at the 2 carbon number, the OH is replaced by single H. That's why it is called it as a deoxyribose. Okay, degeneration of oxygen. Oxygen का degenerate हो जाता है. That's it. The structure we have seen and the bond we have seen. Phosphate group. Phosphate group. The structure, try to remember. It maintains the charged particle, and it makes the bond with the 5th carbon of pentose sugar. One of the hydroxyl bond it makes with the 5th carbon of pentose sugar. The bond is known as phosphodiester bond. So this is the overall structure of nucleic acid. देखो तुम लोग अगर if you try to memorize, when you see that diagram at the first time, you will feel like no, I won't be able to do that. You will feel lazy to study all those. But if you understand, it becomes so easy, so interesting, and you will feel like studying. Okay, so this chapter is very conceptual chapter and very important chapter. Okay, so try to clear your concept. Everything is conceptual based in this chapter and earlier chapter also, genetics part, everything is conceptual. Okay, so try to clear your concept. It will become very easy, and if you understand this chapter again, you will feel like you'll feel proud of yourself when you understand this chapter. Very important, very conceptual. Okay, so next thing you need to know some terms. There are 2 terms you need to know. Apart from nucleic acid, there are 2 terms you need to know. Short term. One term is called as nucleoside. Nucleoside, S-I-D-E. Nucleoside, what is nucleoside? You need to know. It's made up of 2 things. Nitrogenous bases and pentose sugar. So nitrogenous bases and pentose sugar, they combine together and form nucleoside. So when there is a nucleoside, we add a suffix. Suffix मतलब जो लेटर का लास्ट पार्ट में हम लोग एक लेटर ऐड करते हैं. अगर वो मोलेकुल ये दोनों चीज़ से बनाया गया है तो उसका लेटर का लास्ट पार्ट में कुछ लेटर ऐड करते हैं. If in case of purine, if it is purine, we add a suffix osin, O-S-I-N-E. अगर purine होते हैं, we add, उसमें क्या ऐड करते हैं? Osin ऐड करते हैं towards the last part of the letter. So when we read or when we pronounce the name of purine, for example, purine का example adenine. This was his original name, adenine. Okay, but when we find that adenine is made up of these 2 nitrogenous bases and pentose sugar, that is nucleoside, we pronounce it as a, we add this word towards the last part of their letter. So adenine से ये क्या बन जाएगा? Adeno साइन बन जाएगा. ठीक है. So we read slide in a different manner. Okay, when it is nucleoside. So guanine, it will become guanosine. ठीक है. ओसिन को हम लोग ऐड करते हैं towards the last part of the letter. If it is pyrimidine, we add a suffix. हम लोग सफिक्स बोलते हैं उसको बायोलॉजी टर्म में, जो लास्ट पार्ट में ऐड करते हैं. वी ऐड सफिक्स idine, I-D-I-N-E, towards the last part of the letter. So if it is pyrimidine, so letter क्या बन जाएंगे? So if it is thymine, so we will read as a thymidine. ठीक है. So you write by yourself. If it is cytosine, we will call it as a cytidine. If it is uracil, we will call it as a uridine. If it is nucleoside, what is nucleoside? It is made up of 2 things, nitrogenous bases and pentose sugar. So this is some important short term you need to remember. Okay,
there is one more term. We call it as a और एक term है, you need to remember, we call it as a nucleotide, TIDE. So nucleotide और एक term होते हैं nucleotide. When we talk about nucleotide, it means it is made up of nitrogenous bases, pentose sugar plus phosphate group. So तीनों ही रहेंगे उसमें, phosphate group, nitrogenous bases and pentose sugar. So these three combine together and we call it as a nucleotide बोलते हैं, ठीक है. Basically it is the composition of nucleic acid only, but कुछ term होते हैं that we need to remember also, nucleoside and nucleotide. When we talk about nucleotide, it means it is the made up of nitrogenous bases, pentose sugar and phosphate group. तो इसमें अगर nucleotide होंगे तो we add a suffix. In case of purine, we add ylet or ylet, ठीक है. So towards the last part of the letters, we add ylet. So ऐसा होंगे तो adenine को क्या बोले जाएंगे, adenine को क्या बोलेंगे हम लोग? We will call adenine, it is a adenylate. Guanine को क्या बोलेंगे, guanylate. So we will pronounce like this, adenylate, guanylate. Okay, so when we talk about, when we come across a word adenylate or guanylate, please remember that means it is nucleotide, ठीक है. In case of pyrimidines, we add a suffix dilate, DYLAT. So then we will read the sentence thymine as thymidylate. Thymidylate. Okay, MI. Thymidylate, cytidylate, uridylate. तो ऐसे हम लोग रीड करेंगे सेंटेंस को. ओके, ऑल राइट. सो nucleoside and nucleotide. Remember, what is nucleoside? It is made up of pentose sugar and nitrogenous bases. So if it is nucleoside, we add a suffix osin in case of purine and idine in case of pyrimidine. If it is nucleotide, we add a suffix ylet in case of purine and dilate in case of pyrimidine, and it is made up of treating nitrogenous base, phosphate group and pentose sugar. Alright, so this is all about nucleic acid and nucleotide and nucleoside. Okay, so next class we will see the DNA. Okay, so remember, okay, study every day, study. Okay, this chapter you cannot skip if you want to understand, if you want to clear your concept. So consistency is very important in this chapter. You have to study every day. Okay, next class we will see DNA structure.